वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज द हिंदू डिस्कशंस फिर लेकर के हम आपके सामने आए हैं। और आज जैसे कि आपको पता है संडे है और संडे में द हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल का सेशंस नहीं होता है। इसमें आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके लिए एक आर्टिकल्स दिया हुआ है। इट्स वेरिएंट डू नॉट ऑलवेज इवॉल्व द बिकेम लेस वर्डली एंड। सो ये वेरिएंट के बारे में हम लोग भी पढ़ेंगे कि क्या है ये वेरिएंट। उसी से रिलेटेड इस आर्टिकल्स में दिया हुआ है। जैसे राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द पैंडेमिक it was clear that the transmissions begin even before the symptoms can show up, making SARS cope to it difference. So this is basically are the delta variant and alpha, gamma and beta variants are spread all over the world. So how? So I will study about this. बोलता है ये जो लिखे हुए हैं आर प्रसाद के आर्टिकल्स के द्वारा लिखा हुआ है। अब देखिए क्या है। इन अर्ली फरवरी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल लेड ऑन COVID-19 मिस्टर मारिया वेन कारकोवो questions that the pandemic is far from the new variant will emerge and such variant could be more transmissible than the Omicron BA2 variant. ये जो Omicron BA2 variant है, the next variant of the concerns will be more fit. जो आने वाले जो वेरिएंट है ये कंसर्न्स किया गया है कि बहुत ज़्यादा फिट होगा, मजबूत होगा। एंड व्हाट वी मीन्स दैट it will be more transmissible because it will have to overtake what is currently circulations. The big question is whether or not future variant will be more or less. डॉक्टर वेन जो नेक्स्ट वेरिएंट आने वाला है, संभावना बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि फ्यूचर में जो वेरिएंट विल मोर लेस या सर्वर, जो आने वाले जो वेरिएंट होंगे वो कैसा होंगे, मोर लेस होंगे या फिर बहुत ज़्यादा सर्वेंट्स होंगे, उसके बारे में बात किया हुआ। बोलता है एवरेडिंग एंटीबॉडीज़, इसीलिए एंटीबॉडीज़ तैयार करना। बोलता है दैट ओनली वे द नेक्स्ट वेरिएंट कैन बिकम इवन मोर ट्रांसमिसिबल देन द ओमिक्रॉन वेरिएंट इज बाय हैबिटिंग या फार हायर एबिलिटी टू एबडेवल neutralizing antibodies. This would means that full vaccinations, say 2 doses, you have to complete the 2 doses and will be even less effective in preventing breakthrough infections. But so far fully vaccinated people have been found to be less likely to suffer from severe disease requiring hospitalizations and even death. That is because it is the T cells, B cell, both two cells are given over there, T cells and B cells. और इसी सेल के कारण लोगों की मौत होती है। बोलता है कि दैट कम्स इनटू प्ले द रिड्यूस द सेवरिटी ऑफ द डिजीज। द मेमोरी T cells आर एक्सट्रीमली अनलाइक टू प्रिवेंट SARS-CoV-2 इन्फेक्शंस। ये मेमोरी क्या करता है, अनलाइकली, ये पूरा मेमोरी को काम करने के लिए बंद कर देता है। इसलिए द मेमोरी T cells आर एक्सट्रीमली अनलाइक टू प्रिवेंट SARS-CoV-2 इन्फेक्शंस। That is just not what T cells generally do. They may reduce COVID-19 disease severity and prevent death. Dr. Sani Crotty from La Jolla Institute for Immunology, the Jolla, California, has either told the Hindu. कैलिफोर्निया से रिपोर्ट के अनुसार बोला गया है कि ये रिपोर्ट फिर द हिंदू को बोला, और हिंदू फिर क्या किया, इस चीज़ को छापा। बोलता है कि द वेरिएंट आर वाइल्ड कार्ड द स्टिल डोंट नो एवरीथिंग अबाउट दिस वायरस. We still don't know everything about the variant and the future trajectory of that, Dr. Wayne Kharkova added. Virulence unpredictable. While the next variant has to necessarily be more infectious than the Omicron variant, whether the variant will be more or less severe cannot be said with certainty. But it is important to remember that right from the very earliest stage of the pandemic, it became clear that transmission of virus spread begin even before symptoms can show up. That is what makes SARS-CoV very different from the 2020 SARS virus and the MERS virus. अब यहाँ देखिए इस पॉइंट को देखिए, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द SARS-CoV-2.
That means the virus and MERS, MERS, MERS are very different, are very dangerous things. इसका जो symptoms कुछ दिए हुए, because since transmissions begin even before symptoms set in well and before the disease becomes serious, the transmission characterized is decoupled from disease. As a result, the natural evolution process select variant not based on how they cause disease but how they escapes neutralizing antibodies. Almost all SARS-CoV-2 transmissions happens while people have not few symptoms. There is no particular reason for severity to play a role in evolutionary selection. इससे नार्वेटेज, इसका पूरा फुल फॉर्म दिया हुआ है नार्वेटेज का, आप देखें इसका फुल फॉर्म, द न्यू एंड इंजीनियरिंग एस्पायरेटरी वायरस थ्रेटी एडवाइजरी ग्रुप, नार्वेटेज का फुल फॉर्म दिया हुआ है. थिंग्स ओमिक्रॉन mildness is likely pure change and the next one is likely to be more severe against. Dr. William P. Hanage from Harvard, T.H. Chan, Schools of Public Health, Boston tweeted. इस इम्यूनी एस्केप्स का क्या होता है? इम्यूनी एस्केप्स जो दिया हुआ है ये क्यों है? बता, द वायरस was novel and none in the world had any immunity in the beginning of the pandemic, but with millions being infected by the virus and millions being fully vaccinated and some with a combination of natural infections and vaccination, the next variant has to necessarily exhibit higher immune escapes to cause infections. This is the reason that the next variant will exhibit more immune escapes than the Omicron variant. Even though the Omicron variant causes a large number of infections in virus naive peoples and those peoples have been previously infected and vaccinated. At the population's level, disease severity have been less severe compared to with the Delta variant. So Delta variant, but lower disease severity was seen more in peoples who have a pre-existing immunity, whether the vaccination or previous infections. Two studies that try to document intrinsic disease severity of the Omicron variant, compare it with the Delta variant. The studies found that the Omicron variant is about 75% as likely to cause severe disease or death as the Delta variant in a study posted as a preprint in Matrix on January 12. This year, the authors concluded the Omicron-driven wave severe COVID-19 outcomes were reduced mostly due to protections conferred by prior infection and or vaccinations, but intrinsically reduced virulence may account for an approximately 25% reduced risk of severe hospitalizations or death compared to Delta. Intrinsic severity compared. So, in the second study, a report by the Imperial COVID-19 response teams found 69% reductions in hospitalizations risk in people who have been reinfected compared with primary cases. This meaningful but fairly a small difference implies that Omicron alpha and wild type the meaningful have similar intrinsic severity. So Dr. Robbie P. Bhattacharya from Massachusetts General Hospitals, Boston, and Dr. William P. Hangnack from Harvard University, T.H. Chen, Schools of the Public Health, Boston, write in New England Journal of Medicine. Versus don't inevitably evolve towards being less virulent. Evolution simply selected those that the excels in multiple. In the case of COVID-19, in which the vast majority of the transmissions occur before disease, because reduced severity may not be directly selected for it all. Dr. Bhattacharya and Dr. Hanage write, indeed, previous SARS-CoV-2 variant with enhanced transmissibility, that means alpha and delta, appear to the greater intrinsic severity than their immediate ancestors and the previous dominant variant. It is also not true that variants are becoming milder.
delta was more several than the alpha, which was more several than original. Omicron in matter delta, not matter original, and it not part of a study progress to mildness, Dr. Hennes tweeted. Separate linkage क्या था? Just like the transmissions reduced from the disease severity of the SARS-CoV-2 virus, it is also true that the new variant have not evolved from the existing ones. Thus far, new variant of the concerns have not evolved from the dominant proceeding one. Instead, they have emerged from separate linkage, say a report in Nature. Dr. William Hennes to say the same in tweets. SARS-CoV-2 evolves rapidly, but this is not a straightforward. None of the main variants evolve from each other. Instead, so far they are all distinct, becoming gradually filtered by the variant until replaced by an entire new variant. So basically ये जो आर्टिकल्स दिया हुआ है, ये आर्टिकल हमारा न्यू वेरिएंट को लेकर के दिया था। जैसे कि ये देखिए फिगर में आप अच्छे से समझ सकते हैं सारा क्या था। जैसे गामा है, अल्फा है, डेल्टा है, बीटा, ये जो ओमिक्रॉन फैला हुआ है, तो ये से हाउ विल SARS-CoV-2 evolve? This transmission doubled in disease severity of the SARS-CoV-2 virus. In February में डॉक्टर मारिया वान who technical lead the COVID-19 causes that the pandemic is far over. इस तरह से बहुत सारे जो पॉइंट दिए हुए हैं, देयर इज मैनी पॉइंट इज गिवन इन दिस आर्टिकल्स एंड all points are very important for this human beings and for health and for its health. So this is very important. So what should be what is the delta variant and SARS-CoV-2? So this articles is very important. You have to read, and you should be read these articles. There are many articles in given. One articles no black holes. One articles is given. बहुत सारे आर्टिकल्स दिया हुआ है। इस तरह से आर्टिकल्स आप जरूर पढ़ें। इस आज द एडिटोरियल सेशंस का पार्ट नहीं होता क्योंकि संडे में नहीं देता है। इसी से रिलेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स आज की डेट में होते हैं, जिसमें से हम एक आर्टिकल्स आपके सामने डिस्कस किया, और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। आप ज़रूर जाएँ और इसको पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद।